Hello, good evening. Welcome. We are back again with the most relevant topic, the need of the hour, to talk about black fungus or mucormycosis, which has led a crisis within crisis. Recently, many states have flagged cases triggered by black fungus even after being COVID negative. The number of patients reporting this disease in the hospitals is now rising day by day, and more than the COVID cases now. And it is a challenge for the medical fraternity. Actually, problem ये है कि हम अभी COVID से ही उभरे नहीं थे, and this new disease has come up. So the medical fraternity is really going through a toughest challenge, and to talk about it, we have, or I can say, to demystify black fungus, I have to take to talk about it. He is the director of the Luthra Dehradun, belonging to one of the oldest and eminent families in Dehradun. Dr. Gaurav Luthra is the director of the Drishti Eye Clinic, the chief of the cataract, and he has been honored many prestigious awards for his exemplary work in this field. So let us talk to Dr. Luthra about this. Hello, sir. Welcome to Thanks, Soulfit. thanks, Rupa. I think the connection is a little unstable, so if I go off in between, please warn me. Thank you so much for organizing this, because it is indeed a subject which is very, very important today, and almost we have been flooded with queries ever since the last 2 weeks. ये black fungus के बारे में जब से लोगों को पता चला और सबने पढ़ा, टीवी में आया काफी कुछ, तो काफी लोग इससे थोड़ा डर भी गए हैं और थोड़ा जानकारी भी चाहते हैं. And I think it was the right time for you to plan this important topic. And I'll be happy to share, answer all the queries that people might have, so they can send in their queries. And you have few questions for me. I'll be happy to answer them as well. And so thank you, sir, for sparing your valuable time, because as if इतना ज़्यादा ये deadly disease खत्म ही नहीं होने को आ रहा है, and we are just praying and wishing that it comes to an end, and another thing comes up every day. Something is or the other is cropping up. Absolutely. So let's start up with it, sir. So, sir, this new virus, which we call the black fungus. So, what is actually this new fungal disease? है क्या ये, सर? सबको बताइए, because एकदम नया आया है और अभी कोविड से ही निकल रहे थे, तो this has come up. So please throw some light on what is it actually. Right. So black fungus is a layman's term, but इसको हम वैसे mucormycosis कहते हैं, जैसे काफी लोगों ने पढ़ भी लिया mucormycosis. It's a type of fungus जो कि normally grow करती है construction sites पे, डेड प्लांट्स एंड घरों में भी ब्लैक आपको कॉर्नर में कई बार दिखेगा कि कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं, लेदर की चीजें पड़ी हैं, उन पे ब्लैकिश कलर का फंगस ग्रो कर जाएगा. सो इट्स अराउंड एवरीवेयर. सबसे कॉमनली इट इज फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज, एंड स्पेशली जो ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड कंट्रीज होती हैं वहां पे म्यूकर इज वेरी कॉमन. सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फंगस व्हिच कैन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी. म्यूकर इज ओनली वन ऑफ देम. कैंडिडा, एस्परजिलस, देयर आर लॉट ऑफ अदर इन्फेक्शंस आल्सो फ्रॉम फंगस. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस. We all know that fungus जो है फफूंदी कहते हैं ना, so it is basically फफूंदी, right? And बहुत हमारे environment में है already, लेकिन आमतौर पे healthy human being को attack नहीं करती है, because हमारी immunity उसको attack नहीं करने देती है. So we are protected. Like you may get exposed to a lot of fungus, but you will not get any impact from it. But in special situation, and let me tell you कि ये mucormycosis human being के लिए नई चीज नहीं है. It has been around for centuries. And पहले भी हुआ करते थे म्यूकर के इन्फेक्शंस, but they were very, very rare. Occasionally we would have people getting mucormycosis, जैसे जो लोग कीमोथेरेपी पे होते थे, या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जिनकी किडनी का कोई रीनल ट्रांसप्लांट चला हुआ है. HIV, एड्स वाले पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस हो जाता था. सो दे वर अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिनमें की हुआ करता था, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि दैट म्यूकरमाइकोसिस रेयरली हो जाता है. बट इस वक्त सडनली जो ये एपिडेमिक आया, हमने थोड़ा सा फर्स्ट वेव में भी देखा था. दे वर अबाउट 50 to 60 केसेस रिपोर्टेड इवन इन द फर्स्ट वेव, बट बिकॉज दैट वेव वाज नॉट सो स्ट्रांग
एंड दैट टाइम द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वर आल्सो डिफरेंट. उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर रहे थे. अभी ये स्टीरॉइड्स का रोल जो है वो थोड़ा बाद में आया, और स्टीरॉइड्स के अलावा दूसरा डायबिटिक्स का भी जो पता चला है वो अब पता चला है. सो म्यूकरमाइकोसिस इज बेसिकली हैपनिंग नाउ वी आर सीइंग इन कोविड पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड और आर आल्सो गोइंग थ्रू कोविड. सो आई थिंक दिस इज व्हाट ब्लैक फंगस इज. एंड ब्लैक फंगस बेसिकली इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ब्लैकिश कलर में, और ये हमारे नोज, थ्रोट और आईज को इम्पैक्ट करता है. सो आई थिंक वील हैव मोर क्वेश्चंस. आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. या Sir, who all are at the risk of getting this black fungus? सबसे ज्यादा रिस्क में कौन-कौन हैं? Because जो कि कभी कोई कह रहा है कि कोविड पेशेंट्स को हिट करता है, कोई कह रहा है कि उनकी रिकवरी के बाद हिट कर रहा है. So sir, please throw out light कि आम लोगों को भी हो सकता है ये, सर, अगर जिसको कोविड नहीं. I agree. So आम लोगों में नहीं हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग जो फर्स्ट आई टेल कि मोस्ट कॉमनली किस में हो सकता है, उससे फिर इजियर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड. Most persons who are most at risk are first of all those who have had stay in the hospital where they were administered oxygen. So that could be, just oxygen, or it could be BiPAP, it could be ventilator. So those people जिनकी stay ज़्यादा रही hospital में, उनको ज़्यादा risk है. जिनको ज़्यादा severe COVID हुआ तो obviously उनको steroids दिए गए, तो उनमें ज़्यादा रिस्क है. जिनको हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, अच्छा स्टीरॉइड भी डिपेंड करता है कि कितनी डोज में दिए गए. कुछ लोगों को तो स्मॉल डोज ऑफ स्टीरॉइड दिया जाता है, कुछ लोगों को हेवी डोज ऑफ स्टीरॉइड दिया जाता है, कुछ लोगों को इंजेक्टेबल स्टीरॉइड दिया जाएगा. और उससे भी ज्यादा रिस्क होता है जब स्टीरॉइड्स हम देते हैं तो उससे हमारी शुगर बढ़ जाती है. तो आजकल देखने में आ रहा है कि दैट जितने कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए उनको हेवी डोज में स्टीरॉइड मिला उनकी जान बचाने के लिए. सो इट इज नॉट रॉन्ग टू गिव स्टीरॉइड्स. इनफैक्ट steroids have been the most important medicine which has saved lives from COVID because lungs को वो protect करता है जब हम inflammatory phase में जाते हैं. So let us not think कि डॉक्टर ने steroids दे दिए तो कुछ गलत कर दिया. उसने आपकी जान बचाने के लिए दिए, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट है कि क्या होता है, उससे शुगर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से शुगर जब बढ़ती है तो हमारा रिस्क ऑफ ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का और भी ज्यादा बढ़ जाता है. तो स्टीरॉइड यूज, आईसीयू स्टे, ऑक्सीजन थेरेपी, एंड डायबिटीज, स्पेशली अगर डायबिटीज वेल कंट्रोल नहीं है. एंड नंबर 5, immunocompromised people जिनका इम्यूनिटी बहुत लो है because of various reasons. It could be some other diseases जिससे इम्यूनिटी कम है, autoimmune diseases, cancer survivors, chemotherapy, transplant patients. तो इन सबको रिस्क ज्यादा है. But here I will put a qualifier. While people at risk are 90% people are these, अब थोड़े से केसेस ऐसे भी आ गए जिनको सिंपल कोविड हुआ, वो घर पे ही थे. इनफैक्ट आज सुबह से मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता जा रहा हूँ कि सम पीपल जिनको कोई ना हॉस्पिटल स्टे हुई, ना उनको स्टीरॉइड्स दिए गए, ना उनको शुगर हुई, स्टिल कुछ केसेस में हो गया है. तो रेयर, बट उनमें भी म्यूकर हो गया बिकॉज अब उसका कॉज ये देखा जा रहा है कि कोविड इटसेल्फ जो है वो आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देता है. आपने कोई स्टीरॉइड नहीं लिया. सो पीपल हु हैव हैड कोविड विदाउट एनी ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स, ऑक्सीजन थेरेपी, आईसीयू स्टे, स्टीरॉइड्स, डायबिटीज, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको म्यूकर हो सकता है, रेयरली. So I'm not trying to scare anyone, but one has to be alert. And if you have had COVID, you should be alert about getting mucor. But it is not common. It is still extremely rare. So let us not get overhyped. यार मतलब हम बहुत ज़्यादा अलार्म भी नहीं करना चाहते हम किसी को. हाँ जी सर. सर एक क्वेश्चन भी आया है साथ साथ ही, is it contagious like COVID? Not at all. No. It's not contagious. अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस है, उससे दूसरे को होने का चांस बहुत ही कम है. ज्यादा चांस तो है कि दैट हमारे को हमारे एनवायरनमेंट से ही मिल जाएगा. मतलब वो स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे नोज के थ्रू एंटर करते हैं, म्यूकोजा में चिपकते हैं, फिर वहां से वो ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके टिश्यूज के थ्रू सबसे पहले हमारे साइनसेस में जाते हैं. तो मैक्सिलरी साइनस, जो ये वाले साइनस है, इसके अंदर बोन के अंदर एयर होती है, वो मैक्सिलरी साइनस है. और यहाँ नोज के पीछे एथमोइडल साइनस है. तो सबसे पहले इनमें अटैक करते हैं, उसके थ्रू वो इन्वेट करके हमारी आईज के आसपास के ऑर्बिट को बोन के थ्रू जा सकते हैं, माउथ के अंदर जा सकते हैं. तो ये जो ऊपर का पैलेट होता है, ये ऊपर वाली बोन है ना, तो इसमें इन्वेट हो सकता है. और अगर हम टॉर्च से अंदर देखें तो ये एरिया डार्क हो सकता है, मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो सकता है. एंड नोज पे थोड़ा सा कुछ देख सकते हैं. अगर कोई पर्सन बहुत सिक है कोविड से, घर पे आप देख रहे हैं उसको, तो आप टॉर्च से उसकी नोज इन्वेस्टिगेट चेक कर सकते हैं. नोज में कहीं उसको डार्क डार्क आपको ब्लैक पिगमेंटेशन दिख रहा है, या कोई दांत लूज हो गया. सो आई थिंक वील कम टू दैट आल्सो. आई थिंक बट इट्स नॉट कंटेजियस लाइक दैट. या सर एक क्वेश्चन ये है, हाउ टू ट्रैक इट इन द बिगनिंग? Yes, sir. I was about to come to this question कि हम कैसे इसको ट्रैक करें स्टार्टिंग में.
राइट, सो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं मैं थोड़े से शेयर कर लूंगा। इसमें स्टफी नोज हो सकता है, नोज से थोड़ी ब्लीड आ सकती है, आपको ब्रीदिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, या आपको लगता है कि दैट वन साइडेड पेन, मतलब एक साइड पे पेन हो रहा है, यूजुअली एक साइड से स्टार्ट होता है, तो आपकी ऑर्बिट में, आई के आसपास, यहाँ बोन पे थोड़ी सी पेन हो सकती है, हेडेक्स हो सकती हैं सिवियर, और आपको ऐसा लग सकता है कि दैट एक साइड बहुत भारीपन है, फिर यहाँ सुन हो सकता है थोड़ा सा, ये वाले चीक वाले एरिया में, आईज के आसपास, नोज के एरिया में। अच्छा, एडवांस स्टेजेस में थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको हम एस्कार कहते हैं, ESCHAR। तो वहां पे जब वो ज्यादा फैल जाता है इस एरिया में, तो वहां पे एस्कार बन जाता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ब्लैक फंगस। वहां नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आईज में सिम्टम्स जो होते हैं, ऐसा हो सकता है कि यू कैन गेट डबल विजन, यू कैन गेट डिफिकल्टी इन ओपनिंग और क्लोजिंग योर आई, मतलब खोलने और बंद करने में तकलीफ हो सकती है, एक के दो दिख सकते हैं। उसके अलावा आईज के आसपास रेडनेस, थोड़ी सी स्वेलिंग, आई का थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्ट होना, और आईज में सिवियर पेन होना, वाटरिंग, रेडनेस। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी अर्ली साइंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। और इसको हम कहते हैं एक्चुअली राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस, RCAM, मतलब इट्स राइनो मीन्स नोज, orbital means eye, and then it goes into the brain. First it starts from the nose, goes to the eye, then invades the brain, and then it can be fatal. It can be fatal. So यही पूछ रहे हैं what level, इसको किस लेवल पे डिटेक्ट किया जा सकता है? मतलब सर, बिकॉज इट इज सो न्यू टू अस, अगर कोई कोविड पेशेंट भी है या कोई नहीं भी है, मींस रिकवर्ड कोविड पेशेंट भी है, सो हमें कितनी जल्दी इसका पता चले सो दैट हम मेडिकेशन शुरू कर सकें? एंड क्योंकि अगर, और सर किस स्पीड पे ये स्प्रेड होता है, मतलब बॉडी में भी डिटेक्शन एंड स्प्रेड दोनों सर रिलेटेड है? I know. So the earliest that it has been detected is on the 3rd or 5th day of getting COVID. मतलब जो अर्लीस्ट कुछ केसेस में पता है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली इट विल हैपन अ वीक और 2 वीक्स और 3 वीक्स, बिकॉज यू नो इतना टाइम लगता है बॉडी की इम्यूनिटी कम होने में। और आजकल स्टीरॉइड्स जो है वो स्टार्टिंग में नहीं दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स का इंडिकेशन होता है जब हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो, या लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो, या हमारे मार्कर्स बढ़ रहे हो, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे डी डाइमर और फेरिटिन एंड CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब ये बढ़ने लगते हैं तभी स्टीरॉइड दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि स्टीरॉइड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है कि दैट सारे पेशेंट्स एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने क्या लिया था, आपने क्या लिया था, वो नोट्स एक्सचेंज करते हैं सब लोग एक दूसरे से। एक जने का घर में अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया होता है तो बाकी सारे घर के 6 मेंबर सोचते हैं कि मैं भी यही ले लेता हूँ, you know. So I think this is one of the reasons that we can have a problem, and I hope our link is not breaking. बीच-बीच में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्क थोड़ा सा weak है. Maybe somebody can check whether our transmission is fine and our audio is fine. So जी आप ध्यान रखिएगा इसका. So first signs can be picked up. Most important thing is to suspect it early, because अगर हम early stage में इसको पकड़ लेंगे तो हमारी nose और मतलब involvement उतना कम होगा. एक बार वो हमारी nose और sinuses के through eyes के आसपास पहुंच गया तो कई बार eye sacrifice करनी पड़ जाती है, तो हमें exenteration करना पड़ता है, and eyeball को ही कई बार remove करके पूरा अंदर से bone clear करनी पड़ती है, पूरा ये cheek bone खोलनी पड़ती है और ये पूरा area को debride करना पड़ता है. और अगर brain में पहुंच जाए तो risk is even more. तो पहले वो usually nose, sinuses, eyes, and then it goes into the brain. एक बार वो brain में पहुंच गया, then of course you know it might become difficult to save the life of the patient also. So it can be detected from 3-4 days, 5 days to 3 weeks, or even 1 month after recovery. And some people who have been COVID positive may actually, you know, some COVID positive patients may, you know, be absolutely fine and back home after 15-20 days, और उसके बाद भी उनको ये म्यूकर हो सकता है. और कुछ लोग जिनको पता ही नहीं था कि उनको कोविड होके खत्म हो गया तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, they may not even find out, but उनमें भी इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है, एंड एक्सट्रीमली रेयर केसेस में उनमें भी हो सकता है. सो अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी पहले बताए थे इनमें से कुछ भी हो रहा है, we have to be alert and go to 2 people. Go to the ENT doctor and go to the eye doctor. These are the 2 first people जिनके पास आपको जाके एक बार अपनी नोज एंड थ्रोट चेक करानी चाहिए और आईज को चेकअप कराना चाहिए. और अगर वो ठीक समझेंगे तो वो आपको टेस्ट लिखेंगे, CT स्कैन या MRI या समटाइम्स नेजल बायोप्सी, म्यूकोजल बायोप्सी, ये सब वो लोग कर सकते हैं, बट पहले आपको इन 2 डॉक्टर्स को जाके दिखाना चाहिए. So, और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए to take to be worried about this disease and to prevent it? इनिशियल स्टेज पे हम क्या प्रिकॉशंस लें at home only to start up के हमें ना हो या हम ध्यान रखें? So there's a question, sorry. If anyone recovered from COVID, so is there any precautions to avoid black fungus? Yeah, so वही हम बात कर रहे हैं precautions की.
सो इसमें क्या है कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को पहली बात तो कोविड रिकवरी हो जाती है तो लोग सोचते हैं अब तो हमारे 15 डेज हो गए, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि कोई कोविड नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, वो फटाक से अपना सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं, उल्टा ज्यादा रिबाउंड फिनोमेना के साथ वो सबको मिलना मिलाना, दे माइट स्टार्ट गोइंग आउट. सो इवन आफ्टर वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, इट टेक्स अ गुड 15 days फॉर योर बॉडी टू एक्चुअली रिकवर. सो वी शुड मेंटेन utmost प्रिकॉशन आफ्टर कोविड रिकवरी फॉर अनदर 15-20 days, जिसमें कि आपकी बॉडी अपनी इम्यूनिटी को रिकवर करती है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एट रिस्क कि आपको ये सारे, और स्पेशली अगर हम कोविड रिकवर्ड हैं तो हमें फील्ड्स में, प्लांटेशंस के पास और जहाँ पे सॉइल है इन चीजों के पास, या जहाँ अनक्लीन एरियाज हैं लाइक स्टोर रूम, वेयर देयर माइट बी लॉट ऑफ डस्ट एंड फंगस का चांस ज्यादा है, इन सब चीजों से मतलब हाइजीन मेंटेन करना, एनवायरमेंट की हाइजीन बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना. और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत फंगस होती है तो वहां पे अगर हम जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क प्रोटेक्शन के साथ हमें जाना चाहिए. एंड सो ये चीजें फॉलो करनी चाहिए. आफ्टर कोविड रिकवरी फॉर 15-20 days, प्लीज फॉलो अ वेरी वेरी हेल्दी एंड लिमिटेड लाइफस्टाइल. ट्राई टू नॉट बी ओवर enthusiastic. Limit yourself to home. Take a very good diet. Don't do too much of exercise. Do minimal kind of mild walking or something is good enough, because COVID के बाद cardiac weakness भी हो जाती है कुछ लोगों में. And suppose there have been lot of instances where you suddenly started exercising just 1 week out of COVID and they had a cardiac arrest because the heart may be still involved. So give it time. Gradual recovery is always going to be better, and that's how we can protect ourselves from this thing. एक आपने ना वो मास्क के बारे में पूछा था. Would you like to ask that later or should I comment on it right now? नहीं, आप करिए सर, प्लीज बताइए ना. So there are two things. एक तो अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो उसकी जो बॉटल होती है जिसके थ्रू वो फ्लूइड पास होता है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर हो, वी हैव टू यूज ओनली स्टेराइल वाटर. मतलब अगर बॉइल्ड वाटर यूज कर लें या हम वैक्स से यूज कर लें तो क्लीन वाटर शुड बी चेंज एवरी 24 hours. And disposable tubing should be used, which should be again changed after every 24 hours. And we should ensure कि that हम alcohol wipe से या swab से अपने कैमरास वगैरह को अगर नोज में कुछ लगा रहे हैं तो उनको हम रेगुलरली क्लीन कर लें. तो ये तो ऑक्सीजन का हो गया. और थोड़ा सा ये डाउट हुआ है, वी आर स्टिल नॉट श्योर, बट जो लोग अपना मास्क रीयूज करते रहते हैं, स्पेशली जैसे डिस्पोजेबल मास्क है, दैट इज मेंट टू बी यूज्ड फॉर अ डे और टू एंड थ्रोन. So if you keep wearing the same mask for 3-4 days, 5 days, तो वो क्या होगा, आजकल ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, गर्मी का टाइम है और उसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसमें साथ में हमारी ब्रेथ से काफी सारा मॉइस्चर आ रहा है, वो गीला हो जाता है, बहुत इजीली उसके अंदर फंगस की ग्रोथ आ जाती है. तो सपोज हम सेम मास्क रीयूज करते जा रहे हैं तो हमें उससे भी रिस्क है कि हम फंगस को एस्पिरेट कर सकते हैं. और अगर हम क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी वॉश्ड, ड्राइड एंड आयरन्ड so that and so that it becomes sterilized. And plus, when we are not using a mask, let's not keep it in a cool place like inside the almirah or someplace. It is best to leave it in the sun, because in the sun, with the UV light and with the temperature, I like to leave my mask in the car itself, because car becomes really hot and there is bright sun. So after I come back from work, I just leave that mask in the car, and I keep 2-3 masks at a time so that I'm using different masks for different areas of the house, and then I keep changing them. So frequent change of mask and maintaining the mask in very good condition and washing it regularly. I think these 3 things are very, very important. Mask hygiene भी हमें ध्यान रखना चाहिए because of these increasing cases. Possibly, yes, possibly. We are not 100% sure that this is a cause, but we have to, but some precaution लेने में. So there's a question that we have not heard of this disease ever. Moreover, why are these cases happening in India only, although other countries did not have these cases at all? Right. So, as I told in the beginning of the show, mucor is basically found more in Australia, Indian subcontinent, so Pakistan, Bangladesh, Nepal, these areas. It is less commonly found in the West, in the US and in Europe and all. Plus, their climate is different. Tropical climate जैसे हमारा है, तो Southeast Asian countries में, हमारे areas में ज़्यादा देखने को मिलता है. Plus, India has gone through one of the biggest waves. I mean, हमारी जो wave आई है, this has been one of the biggest. Second thing is that there may have been indiscriminate use of steroids. As I was saying, people copy from their friends. वो फोन पे सबसे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड कर दो मेरे को, और वो अपने आप, मतलब सपोज एक जने को स्टीरॉइड मिला था 1 week पे बिकॉज उसको प्रॉब्लम हुई थी, वो क्या होगा, वो 10 लोगों से शेयर करेगा और वो लोग सोचेंगे ठीक है मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, वो तो इसी दवाई से ठीक हो गया था, मैं भी ले लेता हूँ. अच्छा, न्यूज़पेपर में पढ़ के कई लोग देखते हैं कि स्टीरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, लाइफ सेविंग फॉर कोविड, दे माइट जस्ट स्टार्ट इट ऑन देयर ओन. So there has been gross misuse of steroids. So please don't take steroids yourself. अपने आप मत लीजिए स्टीरॉइड मार्केट से लेकर के कि मेरे दोस्तों ने सबने लिया था, रिश्तेदारों ने लिया था तो मैं भी ले लेता हूँ. प्लीज डोंट डू इट. देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस फॉर स्टीरॉइड. देयर डोज हैज टू बी टेलर्ड and it has to be tapered off in time. We cannot keep taking it for a week, 2 weeks or 3 weeks. Usually it is given for a week, and अगर कोई ज्यादा सीरियस लोग होते हैं तो उनकी टेपरिंग कोर्स में 2 to 3 weeks maximum
एंड अगर साथ में हम स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो डायबिटीज के लिए हमें ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करनी है. अगर शुगर हाई होती है, कई बार ये मिस हो जाता है, हम स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, शुगर 300-400 पहुंच गई. इवन दोज पीपल हु आर नॉन डायबिटिक, कोविड से स्टीरॉइड यूज से बहुत लोग डायबिटिक बन गए. सो प्लीज गेट योर शुगर्स चेक्ड एवरी 2-3 days, एंड इफ योर शुगर कम्स हाई, ट्रीट इट मेटिकुलसली फ्रॉम विद गाइडेंस फ्रॉम द फिजिशियन. एंड शुगर को कंट्रोल रखना बहुत बहुत जरूरी है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच विल हेल्प अस. सर, पर एक बात बताइए, जिनको कोविड के ड्यूरेशन में शुगर हुआ है, जैसे सर हमें कई लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम भी शुगर होता है, बट सर आफ्टर वी हैव अ बेबी तो वो ठीक हो जाता है. सर जो कोविड के साथ जिनको शुगर हुआ है तो वो कंटिन्यू रहेगा सर, शुगर रहेगा? नहीं, 90%, 80 to 90% लोगों का तो ठीक हो जाएगा. कुछ लोग जो ऑलरेडी बॉर्डरलाइन डायबिटिक थे, होने वाले थे डायबिटिक, और वो स्टीरॉइड से हो गए, दे मे नॉट गो बैक टू बीइंग नॉर्मल, यू नो. सो उनमें हो सकता है. सो वी हैव टू बी अलर्ट. अगर हमारे स्टीरॉइड्स बंद भी हो गए तो डोंट थिंक कि अब मेरी शुगर चली गई. कीप गेटिंग इट चेक एवरी वीक फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड ओनली इफ यू फाइंड कि कंसिस्टेंटली वो नॉर्मल रह रही है, HbA1c नॉर्मल रह रहा है, देन ओनली डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन. डोंट डू इट योरसेल्फ. यस सर. और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कमेंट इसके बीच में कि अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, खाना पीना अच्छा करिए, घर का खाना, ताजा खाना खाएं, तो so they'll be fine. Absolutely. Healthy lifestyle, which should include good, clean food. No junk food. Try not to order food from outside all the time, because that will definitely lower your immunity. And also, if you can do pranayam and meditation, they go a long way. So meditation, and because they build up your immunity very well. So let's not underscore the importance of these two things. It's a breathing exercise. Plus, don't do vigorous exercise. If you're suffering from COVID, or if you have just recovered from COVID, vigorous exercise is not recommended. Not allowed. Yes. For at least a month after you've got COVID. Yeah. So if someone is seeing symptoms of black fungus at home, so what is the initial aid they should do? उनको सबसे पहले ऐसा क्या करना चाहिए सर? Immediately go to the doctor. Don't even think anything else. If you are suspecting black fungus, if you see any of these signs कि nose से bleed हो रहा है छोटा सा, या nose में से crusting हो रही है, या nose में से abnormal black pigmentation around the nose, या nose block हो रही है, हमें लगेगा कि शायद sinusitis हो रही है. मुझे तो पहले भी हुआ करती थी sinusitis, तो वही हो रही होगी. लोग अपना एंटी एलर्जिक खा लेंगे. या one sided pain हो रहा है, एक आंख रेड हो रही है, वाटर कर रही है, थोड़ा बल्ज कर रही है, एक साइड पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, just go straight to the eye doctor or to the ENT specialist and get yourself checked. There is no point being sitting at home, because the earlier we start treatment, और इसका treatment भी बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा treatment है. It has a long treatment, and it should be checked immediately. Yes. So there's a question also coming: for how long it is required to take medicines after recovery from COVID? You don't need to take any medicines after recovery. If you have recovered from COVID and your doctor has said no medicines are required, you don't need to take any medicines. If you want, for your satisfaction, you can continue to take maybe vitamin C or vitamin D once a week. That's fine. I mean, medicines, unless आप severe COVID से निकले और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके स्टीरॉइड्स अभी एक हफ्ता और चलेंगे टेपरिंग कोर्स में, या उन्होंने आपको कोई और मेडिसिन ब्रीदिंग के लिए दी है, लाइक समटाइम्स वो ब्यूटेसिनाइड इनहेलर होता है, कुछ चीजें हैं, तो वो अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो एक अलग बात है, वो ड्यूरेशन भी लिख के देंगे. बट आप अपने आप कोविड रिकवरी के बाद प्लीज कोई मेडिसिन मत लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है कोई मेडिसिन लेने की. So there's another question: what about the weakness after COVID? Too much of weakness. I'm feeling it's been 18 days. Any good medicine for that instead of vitamins? Yeah, so it is very well known that after COVID, most people will feel weakness. They will have, weakness in their body. They might have some body aches. They may get headaches. They may get tired very easily by walking, maybe just, a few hundred steps. Going up the stairs, they may get a little breathless. So weakness is very common. Even eyes की weakness हो जाती है. हम कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, especially phone ज़्यादा देखेंगे, computer ज़्यादा देखेंगे, तो we'll get tired. We might get a headache. Now there is no shortcut cure for that. It just requires adequate sleep for 1 or 2 hours extra. Take a very good diet. Follow a healthy, mild lifestyle. Don't do any vigorous exercises. Don't read too much. Don't see your phone too much. And remain relaxed. Give your body time to recover on its own. There are no medicines which will help you recover. Take adequate amount of proteins and take at least 15-20 days for your body to recover. It takes a good 1 month to come out of COVID properly. Sir, there's another question. Is it treatable through medications alone too, or does it always lead to a surgical treatment? Sir, we are talking about black fungus. So the thing is that if we pick up really early, medicines may be enough. So there are special medicines like, amphotericin B and posaconazole, and there are 1 or 2 other drugs also. But they have to be all taken under supervision of your doctor. Now, the role of surgery is basically when the fungus has involved vital organs, like loss of sight हो रहा है, orbit में involvement हो गया, और अंदर
साइनसेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कि वो ब्रेन की तरफ जाने वाला है, एंड वी माइट इवन लूज द पेशेंट, देन वी हैव टू डू डिब्राइडमेंट सर्जरी. इसमें इज नॉट सम miraculous thing, it's a destructive surgery. We have to go into inside the orbit of the eye, remove the eyeball, clean everything. We have to go into the open all these bones and go inside and remove all the fungus and the tissues that are around it. So debridement karna padta hai, remove all the load of the fungus, and then put antifungal medicines there, and then hope for that to recover. But after surgery you have to remain on long, a month or 2 or 3 of antifungal medication, which will help clear off. So the for bad black fungus, mortality rates are very high. Matlab they could be even 30 to 50%. People may not survive even after surgery and medication. So early pickup karna is very important. For that you must visit a good doctor who can guide you. So there's another question. If we haven't got COVID, still we can have black fungus? So for all practical purposes, no. Unless you are immunocompromised, like I told few of those things, ki cancer patients, transplant patients, so all practical purposes, no. There have been a couple of case reports of people who did not have COVID at all. I was today only talking to one of my doctor friends in Uttarakhand, only in Haldwani, on Haldwani side, and they have seen 2-3 cases where there was no documented COVID, yet the patient developed mucormycosis. So what we suspect is कि उनको asymptomatic COVID हो गया, और उसके बाद मतलब हिस्ट्री नहीं थी कि कोविड हुआ. हो सकता है 2-3 दिन फीवर हुआ, ठीक हो गए, उन्हें लगा कि मैं तो ऐसे ठीक हो गया हूँ, और बाद में कोविड हो गया, कोई पीसीआर नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ. सो चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग इज एक्सट्रीमली रेयर, बट maybe you have had asymptomatic COVID, you can still get mucor. Yes. Sir, in some cases, ये जैसे बताया आपने कि fungus reaches the brain from the eye, या सर jaw पे चला जाता है, ये दोनों चीजें हैं. सर eye में एक ही alternative है कि हमें eyes remove ही करनी पड़ती हैं सबसे पहले? नहीं, नॉट नेसेसरली. अगर कुछ छोटा मोटा ऑर्बिटल का इन्वेजन हुआ है तो वी कैन इवन इंजेक्ट एंटीफंगल इंजेक्शंस फ्रॉम साइड ऑफ द आई टू गो बिहाइंड द थिंग, एंड दैट मे हेल्प. सो वी हैव टू डू एन एमआरआई टू असेस. एमआरआई में और सीटी स्कैन करके हम असेस कर सकते हैं कि ऑर्बिट का कितना और साइनसिस का कितना इन्वॉल्वमेंट है. अगर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी सिवियर, सपोज आई बॉल थ्रेटन हो गई है, उसकी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो गई है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या वेन इन्वॉल्व हो गई है, और हमें लग रहा है कि ऑर्बिट मतलब आई बॉल का जो बोन का वो है स्ट्रक्चर है, उसकी एपेक्स से बोन हमारी ब्रेन की तरफ चली जाती है, अगर वहां इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो समटाइम्स टू सेव द पर्सन's life we have to then remove the eyeball. But in big hospitals like Medanta and Gangaram, they are doing 3-4 exenterations of the orbit every day now. उनकी OT list is full. ENT और eye के hospitals की जो referral topmost hospitals हैं like AIIMS Rishikesh, Gangaram and Medanta and some of the other hospitals, they are getting so many referred cases. My friends in these places are saying that daily OT list may have 3-4 people where eyeballs are being removed out of the 15-20 people who reported every day. So it's not common, but it is. सर आज न्यूज़पेपर में भी था कि एम्स में भी काफी केसेस आए हैं with this mucor. एम्स ऋषिकेश में हम सबने रेफर किए हैं, पूरे स्टेट से रेफर हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे उनके यहाँ दे हैव गुड फैसिलिटी फॉर ऑपरेटिंग सच केसेस. So yes, AIIMS Rishikesh has seen a lot of cases. Even here, Max may operate. One of our patients whom we had seen in our hospital had very bad. One of our doctors had gone and seen patient was admitted in ICU and had mucormycosis. Was operated by a big team, out of which one of our doctors also went, and he was operated at Max. And there have been several patients in Dehradun. Our clinic has seen 3 patients already in the last 15 days. Okay, so you are sir conducting these at your? No, we can't do these surgeries. It requires a team. So you require an ENT surgeon who is highly skilled, you need a neurosurgeon, and you need an oculoplasty surgeon who can all get together, and as a team they have to do this surgery. So it can only happen in top institutes where all these facilities and very good facility of ICU and anesthesia are available. Cannot be done in single specialty hospitals. What a grave and sad situation we are all facing. Sad, sir. So there's a question, I recovered from COVID but continuous headache is there. So headaches after COVID recovery are not uncommon. Some people continue to get occipital headaches. Some people get, frontal headaches even without any reason. As I said, our body has been traumatized by COVID. It takes 15-20 days for us to, even after we test negative, it takes good 15-20 days for our body to recover. During that time, headaches may happen. People may not be able to sleep well at night. So if you get a headache, best thing is you can take a tablet of paracetamol or Crocin, but please don't take it like 3 times a day or 4 times a day unnecessarily. Just take it as and when required. It will immediately help. And also avoiding strain on the eyes can help a lot. But headache can also be one of the signs of
a mucor infection, but usually in that it's a severe one-sided headache which will happen, especially in the frontal part like this or this, So headache can happen, but if you are getting headaches, do go and see the doctor, ask your physician, maybe see the eye doctor or the ENT doctor to see what may be happening. But usually these headaches after COVID will be there and they will subside within 15-20 days. But if in doubt that it is persistent, it is troubling you, please go and consult the doctor physically. Yes. Even a teleconsult may not. Maybe sir, because जैसे आपने बताया कि ये पूरा एरिया एंड जॉ का एरिया यूज होता है सर, जॉज में अगर हमें क्या सेंसेशंस आती हैं कि हमें it's alarming that we should really go and visit a doctor because so देखा eyes का आपने बताया. हाँ, jaw में नहीं आएगा, it's more of the cheekbone. So it's usually here that the involvement will happen. It may happen on the bridge of the nose. It may happen in this area below the eyes. And this cheekbone जो हमारी ये वाली है, cheekbones में हो सकता है और pain भी इसी में हो सकती है. So these are the common areas where first symptoms may arise, and there may be deep-seated pain here or around the eye or deep inside the eye you may feel, or it may be a headache here. Rarely frontal sinus का involvement हो जाता है जो यहाँ होता है. So इतने area के अंदर आप सोच लीजिए कि इसमें ज़्यादा symptoms आने के chances हैं. Yeah. So there is another question. How many days, after how many days of COVID-19 recovery, patient may suffer from mucus? So it can happen during your COVID infection. It can happen right after you recover from COVID, and even up to a week or 2 or 3 after COVID recovery. So up to a month after testing positive, you may still have a risk, but one has to remain alert for maybe a month, for 4 to 6 weeks after COVID, because you may remain immunocompromised for a good amount of period even after you recover, maybe 2-3 weeks. Sir, please elaborate regarding the white fungus infections also, which we have been listening, sir. मेरी भी सुबह से किसी से बात हुई तो they said कि हमारे after COVID we've come back, the whole family had COVID, and white fungus में का white नहीं होगा, black है. No, it's not black, it's white fungus. Absolutely. So when we are immunocompromised, all these funguses will have a chance to grow. They all have the same thing कि जब person की immunity कम होती है तो they can grow. Mucus ज़्यादा देखने को मिल रहा है, but there are other fungi, as I said, Candida, and there is aspergillosis. ये सब fungus हैं, ये भी grow कर सकते हैं. Now the problem is that typically immunocompromised लोगों को ना कुछ medicines दी जाती हैं, जैसे fluconazole, voriconazole, ताकि उनको fungal infection ना हो. So these medicines are very good in protecting us from the simple fungi like Candida and Aspergillus. But हो क्या गया कि जो ICMR की advisory आई है उसके हिसाब से भी अगर हम voriconazole या ये दे रहे हैं protection के लिए कि fungal infection ना हो, तो उल्टा mucor का risk बढ़ रहा है. तो those people who were put on voriconazole, उससे क्या हुआ कि जो common fungus है वो तो suppress हो गई, but उससे mucor को chance मिल गया to grow. So white fungus is also, but it's much more rare at this time. जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, that might form only 5-10% of the cases. 90% of the cases are coming those of mucor, and the white fungus can be treated much more easily with the simpler medications. Mucor के लिए we need very expensive and very strong medicines, which are also in very short supply right now. So we don't want any misuse of these medicines either right now. Or sir, there's another question. Can it occur in non-diabetics also? Yes, very much. Now we have seen, so I must like to say that it is most commonly seen in the diabetics right now, and because they tend to have much higher risk. Yet we have seen a few cases even in the non-diabetics. So but they are less common. Less common. Sir, ये जो cases है sir, ये first wave के time तो हमने नहीं experience किए. We did not experience such cases during the first wave. So sir, why is it that we are experiencing in the second wave? और sir, इतना ज़्यादा grave situation ऐसे ही इतनी चल रही है sir? So actually we did experience, maybe the people didn't find out. As doctors, we saw sufficient number of cases even in the first wave. But you have to understand that the second wave has been at least 10 times bigger than the first wave. Yes, sir. Okay. So the number of people, and also it has been more virulent. So this strain which came in the second wave caused much more severe illness in a lot of people. Many more number of people reached ICUs. Many more people reached hospitals. Many people were under home treatment, and many of them were prescribed steroids when they may not actually have needed them. Like they may have, because we didn't know what to do, so we had to go by the doctor. Doctor also didn't know कि that patient को देखा भी नहीं है, उसने phone पे treatment किया, तो उसने सोचा कि इनको सांस की दिक्कत हो रही है, तो उसने steroid भी prescribe कर दिया. Patient ने अपनी तरफ से थोड़ा extra ले लिया. So I think the whole volume game has played this role. The extent of population, maybe 50% of our population has had either symptomatic or asymptomatic infection. So obviously, the number of cases has to be 10 to 20 times more of what we saw in the first wave, and that's what it is.
And sir, how deadly is this black fungus? So ये कितना deadly है sir actually? मतलब according to the degree कि कितना ज़्यादा किसको हो रहा है? So how deadly is it, sir? So actually, we have also seen that आपने सुना होगा एक टेस्ट हम लोग करते हैं कोविड के लिए called ferritin. Amongst the other tests, we do CRP, we do, D-dimer for bleeding tendencies, we do, some, other LDH. One of the tests we do is ferritin. Ferritin इसलिए करते हैं कि जब कोविड होता है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ना आयरन के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, एंड इस फंगस को आयरन बहुत पसंद है, सो इट टेंड जिनको डेस्फेरोक्सामिन ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आयरन लेवल्स हमारी बॉडी में टेम्परेरीली बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन, तो इट अटैचेस टू दोज आयरन molecules and then it invades the blood vessels. So it is actually very deadly because it can invade through our blood vessels, break through them, go into the tissues, and then it grows really fast compared to other fungi. It grows very fast. So it has been said that in patients with this ROCM, rhino-orbitocerebral mucormycosis, there can be mortality of up to 50% of people, which means that 50% of people who get a bad infection may actually not make it. They may not survive. So it is actually very dangerous and it is quite deadly. We have to pick it up early and we have to treat it appropriately with good antifungals. For people who don't receive treatment, survival rate is only 20%. For people who receive adequate treatment, survival rate is 50 to 60%. Okay. और सर ये मैंने आपसे अभी पूछा भी था सर, ये कितनी देर तक चलता है सर इसका ट्रीटमेंट, मतलब कितनी देर तक इसकी मेडिकेशन आगे कंटिन्यू करनी पड़ती है सर? सो फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं ना, उनमें यूजुअली बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है. जैसे कभी हमारे नेल्स में हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, टोज में हो जाता है, स्किन में हो जाता है. सो it depends on how it can go on for 1, 2, 3 months. The whole course may go on. That has to be decided by the severity of infection. And then, there are tests also now which can be done, which can tell you about the immunity. Even an RT-PCR test is there even for this fungus actually. Okay. It's different from the COVID RT-PCR. So the doctor will decide. Once you're on treatment, then you have to leave it to the doctor to tell you how long the treatment will go on. It is usually a long treatment. Yes. There's another question. What precautions can be taken to save ourselves from fungal infection? As it is said, it spreads through aerosols. So it doesn't spread really through aerosols because it spreads through air, because these fungal spores are all in the air. So I think keeping our houses clean, very, very important. Yes. Those corners of the house which could be gathering dust, and regular vacuuming may be very good, because when we use a broom, suppose हम झाड़ते हैं चीजों को तो वो हवा में आ जाता है सब कुछ, and it is better to use a vacuum cleaner because it is going to suck away everything. So dusty areas, construction sites, old things which are lying and rotting in some corner of the house, in the garage, or in the outdoors, dead plants, dead leaves, they will all carry fungus. So I think having good cleanliness and also wearing a mask. So if you have had COVID, even after you've recovered, wearing a proper mask to protect your nose and mouth from kind of breathing in these fungal spores will protect you a lot. So I think mask is like such a big protection in COVID. First of all, from getting COVID. Second, during COVID, to protect yourself from getting other infections, spreading it to others. And then after you've recovered from COVID, the mask will protect you from all these fungal infections also. I think, one key for 100 things. Why don't we use good mask all the time? Yes, sir. Actually, and we should really buy good masks only, sir. हम लोग भी ऐसे ही लेके सर फैंसी मास्क भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, और यहाँ पे पहन रहे हैं सर. We should cover it properly. ढंग से पहने. And also the decorative masks are of no use. Those single flimsy cloth masks which we try to use, they are just for decoration. They don't protect you in any way. I think it's very important that we use a proper decent mask. If we can't use an N95 mask because we find it difficult to breathe, at least a 3-ply mask, which is properly, pressed, and nose should always be covered. It should be pressed here. It should be here. It should come below your, this thing, and it should cover it from the side, and it should be snugly fitting. So yes. It could be like this. And yes, so if you don't like to be seen with a funny surgical mask, you can wear that inside, and ऊपर से आप इस type का पहन लो. Yes. Decorative mask can be worn on top of a good mask for protection. If you want to be seen more fashionable, wear a surgical mask like that, and then put on one of these fancy masks on top to look good. Yes. Right? So there's another question that we hear that the virus is in air. Can it be possible? And what's the situation in June for this? Right. So COVID, we are now talking about COVID because virus is COVID. Yes, COVID was initially thought that it is droplet borne, but now we know that it is also airborne, especially the second wave हुई है. Airborne or droplet borne का मतलब ये होता है कि droplet means that it will carry only to say 5 or 6 or 8 feet beyond you, and then those droplets, micro droplets, which when we talk, when we laugh, when we sneeze, when we cough,
these droplets are thrown into the air around us, and they will remain suspended for some time, and then they will settle down, right? So droplet spread jo hota hai, that can happen only in a radius around you in a short period of time, within like say 2-3 minutes or 5 minutes. Whereas airborne means that if I am in this room and if I'm throwing out virus when I'm talking or sneezing or coughing, and I leave the room, okay, I leave the room, for half an hour it may remain suspended in the air. So after 15 minutes, if somebody walks into this room, he may still catch the infection. So indoors mein, the virus can remain suspended in the air for as much as 30 minutes. It's like cigarette smoke. Actually, I love to give this example. It is just like cigarette smoke. If there are two people sitting in the room, one person is smoking and the other person is sitting 20 feet away, but he will obviously also inhale that same smoke eventually, right? So that is what is airborne or infection spread. Now imagine if the same thing we are doing outdoors. Suppose I'm standing in the lawn or I'm standing outdoors and I'm smoking, and there's another person standing 10 feet away. Very little smoke is going to reach him, right? Because most of it will get blown away with the atmosphere. So just think of yourself that, if you are with a smoker and that person who's standing 10 feet away from you is potentially smoking, are you likely to get some smoke there? If you think that you're likely to get, please leave that area and please cover your mask properly. And indoors is the maximum spread. So ventilation with good exhaust fan. If our exhaust fans are, let us have 10 exhaust fans in our house, let them keep running all the time, open all your windows, open all your doors, and make sure that you have very good ventilation. So all the smoke will go away, including the virus. And so I think इसी वजह से ACs के use को भी उन्होंने मना किया है during these times जिनके घर में COVID है या. Yes, you're right. Now, by itself, AC is not harmful. See, actually, yes, AC has nothing to do. But only problem is that the AC recirculates the air inside, so it keeps circulating the same air which is carrying the virus. And when we run an AC, we tend to close all the windows, all the doors, so that wo thandi hawa bahar na chali jaye. Now, if you're running an AC, it's fine as long as your doors and windows are open and your exhaust fan is running, right? So AC will just cool down the room. But if your windows and doors are open and your exhaust is running, the air is constantly getting replaced, and you will not likely have a problem. Yes, sir. AC is not the culprit. It's the air which stays inside the room all the time. So a question आया था where we were discussing this कि is double mask necessary? It is very important to wear a double mask. So not really. If you are wearing a quality mask, even one mask is absolutely fine. So if you have a good quality N95 mask, which is well-fitting. Now the word well-fitting is very important. Just an N95 mask which is hanging below the nose is not going to protect you. N95 mask which is well-fitting to makes you almost airtight here, and you find it a little difficult to breathe, and your mask actually collapses when you breathe in, which means that wo suction lag raha hai, usme vacuum ban raha hai thoda sa. Then it is a well-fitting mask. So then it is protecting you. But if you're wearing a flimsy mask, like I said, double mask पहनने में कोई बुराई नहीं है. ऊपर से decorative mask और अंदर से you can have a small surgical mask inside too. So then it obviously works much better. Yes. So there's another question. Is there something like a fungal load to cause an infection, like in the case of corona? Absolutely. So if we get a small dose of fungus, we are less likely because our body's immunity will be able to fight it. But if we get a big load of fungus, just like virus load, अगर हमें ज़्यादा मिल गया, हम बहुत देर तक खड़े रहे एक person के पास जिसको COVID है और वो बोलता जा रहा है, and हम उसके साथ बातें करते जा रहे हैं. So we are more at risk. Same way fungus का अगर we are exposed to a big load of dirt and dust and grime, and then we are obviously going to be more at risk because then the load is too much for your body to fight. Yes. So there's a very important question which has been rising. Those who have taken the vaccine, so will they survive this fungal infection? Because the vaccine के बाद भी people are getting COVID. So but ये जो fungal infection है ये, will they be able to survive? Very interesting question. But let me tell you like this. If we are twice vaccinated, the chance for us the possibility, first of all, you are slightly protected from getting COVID. You may still get COVID, but if you get COVID, you are more likely to have a mild or a moderate disease. You are less likely to have a severe disease and reach in the ICU or, have. So the biggest protection is vaccinated है, तो COVID हो सकता है 2-3 दिन फीवर होके खत्म हो जाए, 1-2 दिन फीवर होके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इम्यूनिटी बहुत लो नहीं होगी. सो अगर आपको माइल्ड कोविड होता है तो ऑब्वियसली यू आर लेस एट रिस्क फॉर ब्लैक फंगस. सो इन अ वे वैक्सीनेशन इज ऑब्वियसली प्रोटेक्टिंग अस, बिकॉज फर्स्ट वैक्सीनेशन से हमें कोविड होगा नहीं, अगर होगा तो माइल्ड होगा, और अगर माइल्ड होगा तो रिस्क ऑफ ब्लैक फंगस एंड म्यूकरमाइकोसिस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. सो वैक्सीनेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन एवरी पॉसिबल वे. यस सर. सर वाइट फंगस के बारे में आपने भी बताया सर, एंड सर वी वर हियरिंग अबाउट कि सर जितने अभी आपने बताया कि स्टेरॉइड्स के जो यूज है, अगर एक्सेस यूज हो रहा है तो ब्लैक फंगस के चांसेस ज्यादा हैं. तो सर ये सर जो हमें कोविड के टाइम में जो जितनी वो दवाइयां दी जाती हैं, तो सर आर दे ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
No, so okay, steroids is the main thing, but also tocilizumab, which is being given, for some people, that also has lowers the immunity to an extent. So Yes. that may be responsible. But the other drugs, see, they are giving doxycycline, ivermectin, which frankly we don't even know whether they have a role in treating COVID. We are taking them because we think that they work and they are quite harmless. Otherwise, frankly, the only drug which really is required when you get COVID is paracetamol for Yes. fever and nothing else. You may take vitamins because yes, they help. Vitamin C helps fight your immunity is better. Vitamin D helps. Zinc has been thought to help. You may or may not take all these things, but the other drugs like remdesivir, उनका कोई खास इसमें role नहीं है. So I think we should take only those drugs which are really required by our body, because every drug has side effects, and steroids should only be taken in supervision of a doctor when he decides based on your tests. Your markers are going up, inflammatory markers are going up, saturation is falling, or your lungs are showing changes on X-ray or CT scan, you have to be put on steroids immediately. And then it has to be tapered, properly. You cannot keep taking steroids for very long. Sir, एक question है, if a diabetic has had corona before, and sir, मतलब काफी देर हो गई है, काफी months भी हो गए क्योर हुए हुए, तो सर उनको भी fear है, मतलब कि उनको black fungus हो सकता है, another I think 4-5 months हो चुके हैं and they are at home. Okay, so they are not at higher risk, but they are at risk because they are diabetic. So if they are diabetic and they are not taking good care of your diabetes, you become immunosuppressed, and then the diabetes gives a rich, a medium to the fungus to thrive. So even in diabetics, bad diabetics who are not well controlled, have never had COVID, they can also be at risk of mucormycosis, right? So yes, yeah, don't be complacent. So यही क्वेश्चन था कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं, they need to be worried, चाहे वो घर पे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो रिकवर कर चुके हैं. So they really need to be worried about this. ज्यादा चिंता, देखिए अब ना फिर वो डराने वाली बात हो जाएगी. तो ज्यादा तो गड़बड़ उन लोगों को है जो आईसीयू स्टे करके आए हैं, जिनको हाई डोज स्टेरॉइड्स मिले हैं, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी चली है और जिनकी शुगर है. हाई रिस्क तो उनको है. स्मॉल रिस्क उनको भी है जिनको घर पे कोविड हुआ था, वो घर में ही रहे. तो मतलब वी कैन नॉट से कि उनको नहीं हो सकता, उनको हो सकता है, बट चांस इज वेरी स्मॉल. मतलब 99% उनको नहीं होगा. सो अननेसेसरली स्केयर भी नहीं होना चाहिए. Yes, sir. Because I think मैंने questions भी लोगों सबके cover किए हैं, अपने भी. आप से एक और question आया है, what about blood thinning medicine, sir? Yes, sir. This is very important, very nice question. People say after COVID you should have these, sir. This is a very good question. It's a good question because we have seen coagulation disorders in COVID and even with vaccination. The thing is that we have to do some blood tests to see whether blood thinner is required. So everybody actually may not require a blood thinner. For this, the test which we normally do is a baseline D-dimer. And then after that, around the 7th, 8th day, when we are checking all the inflammatory markers, we repeat the D-dimer, and we may then repeat it every 3 days. And that tells us whether somebody is going to need anticoagulants and blood thinners. Enoxaparin has been used. So COVID में जिन लोगों को significant disease होती है और जिनके D-dimer बढ़ जाता है, उनको definitely blood thinners लेने होते हैं. But सबको लेना जरूरी नहीं है. You have to again trust your doctor. Ask your physician whether you need it. He will get your test done. He will tell you whether you need to be on anticoagulants. So again, let's not give universal advice कि सबको ही लेना है. ऐसा नहीं है. हाँ सर, एक और बात थी सर, जो कई लोग सर कोविड से रिकवर होके आए, घर से हॉस्पिटल रह के आए 4 दिन 6 दिन, जो भी दिन सर, दे केम बैक होम एंड सर देयर केसेस देन दे आर सफरिंग फ्रॉम एन अटैक बाद में. सर ये क्यों हो रहा है सर? What kind of attack would you be? Heart attack हो गया, and so they yes, so I was already telling you. The thing is कि COVID actually attacks many parts of our body. So while it attacks the lungs, it can also cause something known as myocarditis. मतलब हार्ट की मसल को वो इन्वॉल्व कर लेता है, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस. सो सम पीपल हु हैव रिकवर्ड एंड कम होम 3 weeks down the line of or maybe a week back home or 2 weeks back home, they may suffer from a cardiac disease, and which you will not find out. You may not know. You may have a little bit of chest discomfort, you may have difficulty in breathing, you may get tired very easily, and some people may have pain in their arm, they may show some ECG changes. And echo अगर हम करेंगे हार्ट का तो, बट मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अभी कोविड से रिकवर हुआ हूँ, शायद उसी का कुछ चल रहा है. एंड स्पेशली इफ यू डू विग्रस एक्सरसाइज, यू स्टार्ट रनिंग अप द स्टेयर्स, यू स्टार्ट डूइंग कि मैं तो 5 किलोमीटर वॉक करूंगा, यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ कि मैं तो फिट हो गया, मेरे को तो कोविड से कुछ नहीं होता. They are the ones who are more at risk. Some people, young people who are cyclists, they went back immediately after a week of COVID recovery to start doing vigorous cycling. So I know of one of the doctor friends in down south who actually collapsed and he died because he got a cardiac arrest. So as I said before in the show,
if we have recovered from COVID, even if it has been mild COVID, let us give a 1 month's time for our body to recover. Even if you had the slightest symptoms and you tested positive, there are many other things going on inside your body where COVID has been affecting us in unknown ways, which we don't know. It affects the nervous system, it affects the respiratory system, heart, it affects everything, right? So let us give that proper time for a month or two to start coming back to our full routine. Let's not punish our bodies till we have recovered completely. Yes, sir. Yes, sir. Any basic advice that you would like to give on your behalf to everyone so that we can stay safe, sir, because we are going through a lot of testing times? Right. I can only say that, it's not difficult to save you may get COVID because it's a pandemic. We cannot say with guarantee that anybody will survive. So I'll give 2-3 advices. Number one, if you have the opportunity and you are able to get vaccinated, please get vaccinated as soon as you can. Now it's open for 18 plus, even though there's a shortage and yes, it's difficult to get a slot, but please keep at it. And if you can get vaccinated. Number two, please don't get vaccinated if you're having any symptoms. It can be dangerous. So if you are getting mild fever or if you are uncomfortable and you feel, what some people are doing, unko jaise hi first symptom lagte hone lagta hai, अरे मैं vaccinate करा लेता हूँ. So वो नहीं करना है. If you are showing even the smallest symptoms of COVID, like fever, sore throat, cough, please don't get vaccinated at the time. It can work against you. Okay. So to protect ourselves, get vaccinated. Number two, very good mask use and social distancing. Let's not meet people unless it's necessary. Let's not leave home if it's not necessary. Let's not go unnecessary shopping, trying to collect stuff and keeping ki that मैं ये भी लेके रख लेता हूँ, मैं ये भी लेके रख लेता हूँ. Number four, ventilation. Very good ventilation. And if you must meet somebody, please meet outdoors. Tell them हाँ बाहर खड़े होके बात कर लेते हैं और 6-8 फुट की डिस्टेंस पे खड़े होके मास्क पहन के बात कर लीजिए. उसमें कोई रिस्क नहीं है खास. Number 5, maintaining good immunity. Please have very good diet. Exercise well if you don't have COVID yet. Exercise well because it helps keep your body fitter. Do pranayam and meditation regularly if you can. It also helps up in building up your immunity and your body will be able to fight the infection better just in case you get it. And if your first person in the house tends to show symptoms, please isolate that person and all of you. If possible, please, except for the one person who's going to look after that person, everybody else should move away from the house to another house or something else and get yourself tested 3-4 days after your exposure so that you can know if you start showing symptoms, you can get tested. Now, home kit is also available. Within a week, we'll have it. If you are at risk and you have been exposed to people, you can do a self-nasal test with that thing. ICMR has approved it and 250 rupees ka milega. We can test ourselves, right? Yeah. So these are the advice. And mucor ke liye to I've already discussed everything in detail. Hygiene and keep your sugar levels normal. Don't take unnecessary steroids and you'll be fine. The risk is very, very small. Less than 1% or even 0.1% of people who get COVID are going to get mucor or black fungus. Don't think that every other person will get it. Yet, be alert to the symptoms of black fungus. If you feel those, please go visit a doctor. You will not be able to judge it yourself. Yes, sir. So thank you so much for sparing time and giving your valuable information. So this was really needed, the need of the hour. And I think we have tried to come up with all the queries people have asked. Anything else anyone wants, you can just write in the comment box or contact sir personally also. It will be a pleasure. We'll be there always to help you. And stay safe, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क पहन के रहिए, and maintain social distancing. Thank you so much, sir. Wonderful, Rupa ji. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. Thank you so much.